promise we made ourselves when we set up Born Free, and the promise to entertain and to entertain meaningfully, and to make the experience a wonderful one. And we've made many good friends. The 300 odd people who've worked on the film Bobby Jasoos have felt so passionate about it, loved the film, loved Bobby, embraced her, spoilt her, and given her everything they had. And I'm very proud on behalf of all of us who are the team Bobby Jasoos to present this theatrical to all of you today. Needless to say, the theme attracted us from the word go. It was an exciting moment in our lives at Born Free when Sanyukta spoke about the possibility of weaving a story around a female detective. The journey from that day hasn't been a very long one. It right now feels like we blinked and we've arrived here. But it took many hours and many months and many people and their love and their commitment to make this film everything I hope and I pray and I believe it is. Private detectives are a very interesting part of our society. They exist in possibly every city. They have flourishing businesses and they make for very interesting entities. Unfortunately, till today, we haven't explored what they do, how do their minds work, what propels them in the direction, charter this very unusual career path. And I say unusual because हम जब भी कहानियाँ सुनते हैं या किसी माँ बाप की बात सुनते हैं तो सभी कहते हैं कि बेटा बड़े बन के डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पुलिस वाला बनना, पर कोई नहीं बोलता बड़े बनकर जासूस बनना. So I would like to invite now some private detectives who have graced this occasion and have agreed to unveil our theatrical of Bobby Jasoos. I will call you up one by one on stage and it will be fun to interact with you. I will start with India's first lady detective, Miss Rajni Pandit. Ma'am, can we please have... I must admit, I've never seen such a turnout for a trailer launch. Fabulous. Thank you so much for being here. Welcome all of you. Welcome all of you. It feels wonderful to just see one man. What can I say? What does it feel to be Bobby? It's been one of the most precious experiences for me as an actor, and I'm not just saying this because I'm at the trailer launch, but the moment I signed up for the film, I knew this was going to be very different. And with each passing day, I felt it more and more and more. And I just want to say that Bobby Jasoos is there for a film. I want to share that specialness with all of you. When you see it, you'll know why. It's pure love. It's love from pouring out from each one of us who's been associated with the film. Starting with Diya and Sahil. प्रॉब्लम्स देखे कि बच्चे कहाँ जाते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, हस्बैंड वाइफ बीच में क्या करती है, काम के बहाने कहाँ जाती है वो पता नहीं चलता है, कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी शक ऐसी बुरी चीज होती है कि आदमी कुछ नहीं कर पाता है. तो ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि डिटेक्टिव बनना जरूरी है. Basically, this is a job which keep you very much entertaining because you have a different kind of jobs to do. And another thing, the shadowing and surveillance which we use regularly on our field. It's really amazing. It's like going behind someone is like you're doing a film or something. Shadowing someone is very difficult part to do because once you're going someone behind and someone realize it कि someone is coming behind us, it's very difficult to tackle up. And being a lady, it's very problematic because though a guy can go behind a guy, but if lady is going behind the guy, then it is very problematic. As a team together, Okay. for some time we take a break and we send someone else behind, like a guy behind a guy. But with the ladies, it won't be a problem because sometimes it happens. If you would like, then I would experience. I will share one experience with you. There was one case where our client used to have to know about his wife, that whether she is working or not, because they were on a going out or having affair because they were on a avenge of a divorce. They have already filed a divorce over there. And that time literally I have to go towards her and I have made a friendship with her. I used to travel for 5 days with her in a train and we used to talk a lot, and she gave all the details about her, right from her
online email in which company she is working, what time she is going, what time she is coming, everything. So this goes with the girls, and guys also happen the same thing, but only the thing that we can't do friendship and we can't share the same compartment. एक मर्डर केस की थी, पुलिस बोल रहे थे कोई मिल नहीं रहा है, तो मैंने 6 महीने वहाँ नौकर बनकर मैं रही थी. तो मैं सबको थैंक यू करूंगा कि सब लेडीज में मुझे बुलाया, सब लेडीज में मैं खड़ा हूँ आज, तो थैंक यू. गर्व महसूस हो रहा है ना. डिटेक्टिव बना तो एक्चुअली मुझे पहले से ही कुछ करने का, थ्रिलिंग के एडवेंचर लाइफ मुझे जीने का ये था, तो नौकरी और जॉब या फिर सारा बिजनेस करके कुछ नहीं मिलने वाला था, और एक्टिंग में तो मुझे कोई लेने वाला नहीं. लोग दूसरों पे जासूसी करते हैं, मैंने इन पे जासूसी की और इसी तरह हमने बॉबी को बनाया है. घोल मेल कर. Yeah, we did a little bit of research. Hi. And spoke to some of them, met some of them, and figured कि ये लोग क्या-क्या सवाल करते हैं, कैसे से इनका दिमाग चलता है. And I think that's how we arrived at Bobby. Anyway, आप बताएं, आपके कोई experiences, कोई आप खास जासूस experiences? क्यों बनी? I have complete more than 8,600 cases today. We can see all family or suffer because for divorce cases and everything, you know, the children are suffer. And I have complete so many cases and so many problems here. But all people don't put the problem. They come to us and every day we talk to them, every different kind of clients and everything, you know. This is a passion for that. I like to talk and everything. Means, you know, I mean, बहुत ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं. अब लड़कियां ज्यादा होशियार है तो क्या करें? My office, I have lots of wonderful, I'm surrounded by lots of wonderful women. Of course, there's Diya. Vidya has been a part of the family recently. Sanyukta has written the film. Tanvi ji, Supriya ji, Benaf, Louisa, EP. So I'm very used to having beautiful women around me all the time and doing all the hard work, and I get to come and say a few words. But honestly, it's wonderful energy. I think women bring with them a lot of patience. And Sahil are good friends. We met about 3 or 4 years ago, and it was at a party that Sahil cornered me. For 3 hours, he gave me a passionate sort of thing of saying, what crap are you making? You got to make good. Narrated the film to us, actually me alone, about a year ago or so. And I loved the passion in the film. I loved the idea of a small town girl who has got big dreams. Her dreams are not about going to New York or London. She just wants to be the best detective in her neighborhood. She's looking for respect from her father. She's looking for respect from her friends, and she wants to do it her way. And I really reacted to that passion. I also reacted to the passion of Diya and Sahil, who were completely and totally vested in the film. Vidya and us had worked together in Pa, and that turned out all right. So it was a huge pleasure to work on a film with her again. We've been working very hard at completing the film. The trailer is just the beginning of our journey, and in exactly 37 days from now, I hope all of you feel the passion that we are feeling at this कि moment. मुझे पता था कि वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो इस कहानी के अस्तित्व से इंस्टेंटली जुड़ेंगी, और वो सबसे अहम बात थी. ये फिल्म बनाने का मकसद था कि एक सच्चाई से ये फिल्म बने, एक ऑनेस्टी से ये फिल्म बने, और मैं जानती थी कि विद्या जितनी ऑनेस्ट एक्टर शायद ही इस इंडस्ट्री में है. एंड मैंने पहले ही कहा था जब मैंने इंट्रोड्यूस किया कि बहुत सालों से मैं इनको देखती आ रही हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, मैंने इनके वर्क कल्चर को विटनेस किया है. वो जिस तरह अपने दिल को, अपने जान को, अपने हर एक, शी invests every molecule of her being into what she does, and that's what Bobby needed, and I couldn't think of anyone else. You know, I've had the most fun doing the disguises, the male disguises importantly, because you know, so many of my male co-stars would crib when they were asked to wear beards or mustaches. Stubble भी थोड़ा हो जाता तो कहते कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पहना है, मैं experience से कह सकती हूँ कि बहुत आसानी से, बहुत मजे से मैंने किया. I enjoyed the male disguises. The moment I'd wear the wig or you know a mustache or a beard, मेरी body language, मेरी आवाज खुद ब खुद बदल जाती. So I was actually most excited to do the disguises because you don't, especially male disguises, you don't get an opportunity otherwise as an actress. Actually मैं पुलिस के पीछे काफी गई इस फिल्म में, मजाक कर रही हूँ. नहीं ऐसी बात नहीं हुई,
पुलिस वाले के साथ थैंकफुली कोई पंगा नहीं हुआ, पर वही मैं कहने वाली थी कि सेट पे काफी बार ऐसे हुआ कि मैं सेट पे पहुंची हूँ, मैं वैन से निकल के वैसे ही जाके खड़ी हो जाती थी किसी के पीछे। एक बार अर्जन के साथ हुआ, अर्जन के पीछे मैं खड़ी हो गई, वो किसी से बात कर रहे थे, वो मुड़े, उन्होंने मुझे देखा और ही कंटिन्यू टू टॉक, ही थॉट कि कोई ऐरा गहरा आ गया है। मैंने उनकी पूरी बात सुनी। Like I told you, it's a male disguises. I love, I think the astrologer, the one where it's a bald, half balding patch on my head. I enjoyed that one. I dubbed with the dirty teeth also. I think that was the most fun. That when I looked into the mirror, I couldn't see me at all. And for an actor, I don't think there's a bigger high. मेरी फितरत है जासूसी करना। अब तो फिल्म बना दी है, पर पहले से मैं करती हूँ दोस्तों के साथ, सभी के साथ थोड़ा बहुत, मतलब मस्ती मजाक में। हाँ, बेचारे सिद्धार्थ को क्यों आप बीच में लाते हो? वो बहुत ही सीधे हैं, बहुत बोरिंग है उस मामले में, तो इस वजह मैं बता दूं तो उनकी जासूसी करनी नहीं पड़ती। आप अगर चाहे तो मैं आप पे कर सकती हूँ, तभी से मैं वाकिफ हूँ, तो आप बस हाथ उठा दें, आपके पीछे पड़ जाऊंगी। पकड़ी भी गई हूँ, मतलब फिल्म में की, रियल लाइफ में छोटी मोटी जासूसी की है, तो उसमें पकड़े जाना क्या मुश्किल होता है। I don't think I've gotten caught. Sahil and Dia have helped us get this baby out of the world. It's an emotional journey for me and for Sahil and Dia and for Sanyukta as well. Vidya has been part of this journey as well. So it's finally letting the world see it. So I'm just happy and I'm letting it out to you guys. इन्होंने पूछा कि आप गुड न्यूज कब दे रही हैं? मैंने कहा आप मुझे 4 जुलाई को गुड न्यूज दे दीजिए कि बॉबी जासूस को बहुत बड़ी ओपनिंग लगी है, बॉबी जासूस सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। इससे ज्यादा गुड न्यूज इस वक्त और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, अच्छे दिन आ गए हैं और हमें पूरी तरह प्यार देने के बाद थोड़ा बहुत उनको दे दीजिए। बॉबी जासूस रिलीज हो रही है, जग्गा कब रिलीज होगी मुझे वो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपटीशन रियली। वीव ट्राइड टू मेक द बेस्ट फिल्म वी कैन and we hope everyone likes it and we wish them also all the very best. It's very difficult to say why a film has not worked. Of course, everybody works hard on their films and you wish that every film would work. But it's an unfair question to ask, quite frankly. Our journey has just begun. We've given it everything we believe we needed to. We've made it with absolute honesty. And I can only pray and hope that each of you adopt this child that we've brought to you and take her the distance and give her the... You know, I can't really, I don't know how to answer that question. Bobby Jasoos is not just a detective film, so it's not just a thriller in that sense. It's a dramedy. So ड्रामा है इसमें, कॉमेडी है इसमें, एक लड़की की, एक छोटे शहर की एक लड़की की कहानी है, उसकी दुनिया है. So I think it's, I don't know how one can really draw parallels between the two films. It's a completely different film. हर फिल्म से कुछ नया सीखने को मिलता है. I think we are relieved that we didn't make the mistakes we made the first time with the second one. Of course, we've made a new set of mistakes, but we've learned from each of them. And I think with every film we will learn new lessons and hopefully grow from strength to strength. मैंने इस फिल्म को अपना सब कुछ दे दिया है. बिल्कुल. सब कुछ. Like they've been saying, अच्छे दिन आ रहे हैं. I really hope अच्छे दिन आ गए हैं. That you know, it means of course a great amount of development, progress, sustainable development. I think it's time we just explored our true potential as Indians. I think we need to begin to take far more pride in being Indians than we ever have. But so all the best to all of us. I'd like to add to that, and I know it'll look like I'm plugging the film in, but it's the truth. There is a new aspiration that we're all feeling as a society, as individuals, as a country, and I hope that Bobby Jasoos is a reflection of that aspiration. And I hope that we all witness how a woman, a female character in a film, has been treated in this one. Since we're talking about the character, it's time now to get to the most important part. So many years, I personally also said that the other day, that I've never had this kind of fun time that we had while we were making Bobby Jasoos. And I think, as Vidya very correctly said, a lot of, or maybe more than a lot, goes to Sahil and Dia. And I think a lot goes to Samar and Sanyukta too, because those two were also greatly, the comfort level that we felt with both of them. And actually what Sanyukta did was
make us comfortable with everything around. Yes, I'm there in the film, so that's where I am. And I do a lot of nice things. Let's all see it together on the 4th of July and really enjoy it, because I'm going to enjoy it. Person I learned the ropes from, Kausar Khala, Tanvi ji. I actually call her Tanvi, but abhi sabke samne. I'm so glad that Dia called me for this film. I would have lost out on a lot if I hadn't accepted this film and she hadn't approached me. I've made friends. I've made colleagues. It's been a fabulous working experience. We didn't even realize when the film got over. And we meet each other even now with as much excitement, enthusiasm, passion. And Dia, of course, is very appalled by what Vidya and I keep doing on set. So we won't do it right now. So I'm very grateful. It's been the look is completely different, and again the credit goes to Dia because she wanted me to look completely different in the film, and I hope I have loved working with Samar and Sanyukta as a writer because they have complete clarity on what they wanted from their actors. And the working atmosphere was really, really chilled out and wonderful. And Sahil was there to solve all problems, if any. Rajendra Gupta ji plays Abba, my father in the film. He's not here today. We miss his presence, but I'm sure he'll meet with all of you soon. A very, very special actor with the most gorgeous. Actors के साथ हमेशा ये होता है. It always happens with the actors. That when we complete a film, we heave a sigh of relief. Film complete हो गई. बहुत rarely ऐसा होता है. It's very rare. मुझे याद है कि we were shooting at Filmalaya for this last song, and it was my last shot of the film. पता नहीं क्यों मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी आंखें नम क्यों हो गई. Filmalaya से जब मैं घर जा रहा था तो I realized that how much I have enjoyed this film. इस फिल्म में काम करके कितना मुझे अच्छा लगा है, कितना मजा आया है, कितना सभी के साथ. And this is saying a lot for a production. It's very difficult to do your scenes and take my eyes off your face. इस बात का भरोसा है मुझे कि whenever an actor enjoys doing a role. बॉबी जैसू जैसे एक बेबी है. मुझे अब लग रहा है मैं भी एक बेबी हूँ जो इस फिल्म के द्वारा बॉर्न फ्री ने और आप लोगों ने जन्म दिया है इस फिल्म के द्वारा. सो थैंक यू सो मच. और जो 1 घंटा दिया, अगर वो 1 घंटा शायद इनके लिए बहुत आसान था मुझे कहना ओके, अगर वो 1 घंटा जो जरूरी नहीं था आपने मुझे देना, बट आपने मुझे वो 1 घंटा दिया. एंड इस वक्त आई रियली फील लाइक क्राइंग. अगर वो 1 घंटा आपने मुझे नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता. थैंक यू सो मच समर, साहिल, संयुक्ता एंड एवरीवन. अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो दिया, एवरीवन. दिया का नाम तो लूंगा. अगला सीक्वल जो बन रहा है उसमें काम करना है मुझे. विद्या को विद्या को पहले दिन ही कहा था, इतना ज्यादा मतलब किसी को एक्टर को कंफर्टेबल महसूस कराना, वरना इट्स रियली डिफिकल्ट कि मतलब विद्या के साथ काम करना. ऐसे पहले दिन गया होता तो आई थिंक मैं काम नहीं कर पाता, बट ऐसे लगा कि मेरी कोई पुरानी दोस्त है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ. और पहले दिन ही बॉर्न फ्री में जब ऑफिस में गया था उसी दिन जो एक अप्रोच था, एक रिस्पेक्ट जो एक एक्टर को एक्सपेक्टेड होता है, एक रिस्पेक्ट जिसके लिए आर्टिस्ट शायद काम करता है, आई थिंक सभी लोग अग्री करेंगे इस बात से. वो रिस्पेक्ट जो मिला वो शायद ही मतलब किसी और जगह मिले. और थैंक यू सो मच उस रिस्पेक्ट के लिए भी. एंड एक एक्सपीरियंस, आई एम सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट शेयर करना चाहूंगा मैं, जो बहुत ही अहम मेरे लिए, जो मेरे दिल में रहेगा और कभी मैं नहीं भूल सकता. हम लोग शूट कर रहे थे हैदराबाद में. काफी ठंडी थी और लगभग एक 100-125 का क्राउड था. हम लोग गाने के लिए शूट कर रहे थे. सब लोग ठंड महसूस कर रहे थे. एक्टर्स को तो ये प्रिविलेज रहता है, वी आर एक्टर. मुझे आज भी याद है वो दिन. एंड पर्सनली जितना भी वहां पर क्राउड था, शी मेड अ पॉइंट. उन्होंने एक सूप बनवाया था सबके लिए, और वहां के हर जूनियर टेक्नीशियन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सबको जाके वो सूप पहुंचाया गया. एंड शी मेड श्योर दैट एवरीवन इज कंफर्टेबल ऑन द सेट. एंड शायद ये कभी होता हो. सो थैंक यू सो मच. बोला जा चुका है और आपको पता भी चला होगा कि कितना प्यार इस टीम में. लाइफ के लिए शायद बहुत इमोशनल आदमी हूँ तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा. सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये फिल्म थी जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम शायद प्रोडक्शन हाउस को, जो भी लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं वो सब एक होके काम कर रहे थे. हर कोई एक साथ था. होता है कोई उधर होता है, बट अभी भी साथ में. तो थैंक यू सो मच दिया, साहिल. I had a great time, great experience. Just waiting for 4th of July. First of all, good evening to everybody present here. ये मुझे इस तरह से छेड़ती हैं, हमेशा फोन पर भी छेड़ती हैं. आज सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म अपनी जो बनाई होती है उसकी हर आदमी तारीफ करता है. फिल्म हमने अच्छी बनाई, हमारा एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, हम लोगों ने बड़ा मिलजुल कर काम किया. ये हर फिल्म की आप
प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, सेट पे, इंटरव्यूज पे सुनते हैं। हमारी फिल्म की खास बात जो है वो ये है कि ये बहुत अलग तरह की स्टोरी है जो आपके सामने एज ए ट्रेलर आई है। ये फिल्म का मिलियू जो है वो एक बहुत दूसरी फिल्मों से अलग है। आमतौर पर जितनी फिल्में देखी जाती हैं, इस फिल्म में जिस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये फिल्म में अलग है, जिसकी वजह से ये फिल्म हम लोगों के स्पेशल बनी। और खास तौर पे मैं अपने किरदार के बारे में अगर कहूँ तो मुझे जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से मैं फिल्म में दिखता हूँ। मेरे के लिए खुशकिस्मती है कि मैंने ये फिल्म के लिए हाँ किया। काफी जद्दोजहद हुई दिया के साथ, साहिल के साथ, हमारे डायरेक्टर्स के साथ, मैं इस तरह का किरदार प्ले करूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई प्लेड दिस रोल, व्हिच इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी सीइंग मी doing something very, very different from what I've done till now in all the films that I've worked. It's been a great opportunity, and working with it's actually intimidating with so many. But अच्छा लगा, and we've all spoken a lot, and there are too many jokes on set, too many things that happened, and yeah, not for the independents on the other side of the world, for Bobby Jasus, because it has a lot of Born Free, and looking forward something very different that I've done. Or yeah, also actually these are all personalities and not look. Clue, okay, that you had to stick beards with. We guys have it. It's irritating.